नमस्कार जय जगन्नाथ। एलटीआर मेन एग्जाम प्राय समस्तंकर पेडागोजी प्रिपरेशन सरी तो आज आम 20टी क्वेश्चन प्रैक्टिस देखा कहार केते मार्क रोचे एवं क्या आउ क्यों प्रकार प्रिपरेशन कले भल नॉलेज आसो कि पेडागोजी अधिक भाव में प्रिपरेशन करने दरकार एथिरु जना पड़िबो। Humanistic learning theory emphasizes the notion that learning is through the formation of connection, learning occurs through the processing of information, the freedom and autonomy of learners, learning occurs by linking stimuli and response. Humanistic learning theory emphasizes कहा उपरे emphasize करी थाए humanistic learning theory आंसर हो सी ऑप्शन द फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर्स। An inclusive school is committed to improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities, differentiate between students and sets less challenging achievement targets for specially able children, committed particularly to improve the learning outcomes of specially able children, decides learning needs of students according to their disability. गोटे इनक्लूसिव स्कूल को प्रकार पिला हेल्प करि थाए बा तार काम कौन थाए चारिटा ऑप्शन रु बाछिबे। ऑप्शन ए ठीक हबो। इनक्लूसिव स्कूल इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सब प्रकार पिला मानकर सब प्रकार इम्प्रूवमेंट पाई ताहा कमिटेड थाए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। Who said that learning is the process by which behavior in the broader sense is originated or changes through practice or training? Henry P. Smith, Kingsley and Gary, Crow and Crow, Wordsworth. लर्निंग रो किछिटा मेन आपणकर डेफिनेशन रही जोटा कि पढ़ी के जिबा दरकार निहाती। एठी ठीक हबो बी ऑप्शन किंग्सले एंड गैरी। The pre-operational stage is subdivided into how many substages? ऑप्शन ए ठीक हबो 2। Who is the father of project method? Crow and Crow, Piaget, Skinner, William Hard, Kilpatrick. प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक सहित संपृक्त तो ऑप्शन डी ठीक हो विलियम हार्ड किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पैट्रिक ये टाइप आपण मन रखिपारे। The main objective of continuous and comprehensive evaluation is to help teacher complete the course, to satisfy parents with children's progress, to lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization, to help authorities monitor school functioning. Continuous and comprehensive evaluation यार main objective टा कौन? C हो to lay emphasis on thought process and de-emphasize memorization. A collection of students' work on a variety of tasks throughout meant for keeping a record of their performance is known as a rubric, file, portfolio, datasheet. सात रे ठीक हम ऑप्शन सी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इंपोर्टेंट एंड ये जो क्वेश्चनटा रहा स्टूडेंट्स वर्क यार कलेक्शन यहीटा ही पोर्टफोलियो रे प्राय तो क्वेश्चन आसे तो मन रखि थे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क जितेबले भी आसीगला ताहले आंसर कौन हम पोर्टफोलियो। इन व्हिच टेस्ट नॉर्म्स इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन टीचर मेड टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोथ नॉन ऑफ दीज। केउ प्रकार टेस्ट रे नॉर्मटा नेसेसरी नुह। ऑप्शन ए ठीक हम टीचर मेड टेस्ट तो टेस्ट रे आपणकर बहुत इंपोर्टेंट टीचर मेड टेस्ट ता सहित स्टैंडर्डाइज टेस्ट
ता सहित नॉर्म क्राइटेरियन से सबू भी बहुत इंपोर्टेंट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आइडेंटिफाई द डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी एमंग फॉलोइंग लेक्चर, प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। एमानक भितरु डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी केउटी हबो? ऑप्शन बी ठीक हबो, प्रोजेक्ट। डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकाल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया। रीडिंग डिसऑर्डर आसीजिबो ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। प्रायतः रीडिंग डिसऑर्डर गोटे पड़े, नहले राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक अच्छे। Which of the following laws necessitates creation of motivation in children before taking up learning task? Law of use, law of disuse, law of readiness, law of effect. सी ऑप्शन ठीक हम, लॉ ऑफ रेडीनेस। पिला को किसी भी जिनस पढ़ाइबा आगु से रेडी केते अच्छे ताकू देखापी पड़े। पिला जिते जाए रेडी हो नाकू आम कि भी जिनस शिखे पारिबा नहीं। द कॉन्सेप्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकर्स इन द लर्निंग थ्योरी ऑफ पियाजेट, कोहलर, थॉर्नडाइक, वाइगोस्की। जेडपीडी रो ना आसीगले किए ठीक है? ऑप्शन डी वाइगोस्की। Which of the following psychologists advocated the idea of congruence between real self and ideal self? Lev Vygotsky, Jean Piaget, Maslow, Carl Rogers. जमिति जेडपीडी आसिले वाइगोस्की ठीक है, से टाइप रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ ए दुईटा वार्ड आसीगले किए ठीक है? ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। Which of the following statements is true? Learning and maturation are unrelated. Learning brings about maturation. Maturation creates favorable conditions for further learning. Maturation is a result of learning. ऑप्शन सी ठीक हम, मैचुरेशन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्दर लर्निंग। मैचुरेशन आउ मोटिवेशन दुईटा जाक इंपोर्टेंट। गोटे ना गोटे आपण क्वेश्चन निश्चित भाव में दुईटा जाक टॉपिक रु पाइबे। द अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर्स इज लर्नर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक, नॉलेज सेंट्रिक। लर्नर पई जदि बेनिफिशियल रोचे, पॉजिटिव रोचे, ताहले आंसर कौन हम? ऑप्शन ए लर्नर सेंट्रिक। Variety in content delivery formats in classroom leads to promotion of hard work by learners, better learning by diverse learners, confusion among learners, promotion of uniform learning. Variety in content delivery कौथिरे हेल्प करे? बी ऑप्शन ठीक हम, better learning by diverse learners. Which of the following is not a component of effective organization of learning? Clear learning objectives, uniform instruction for all students, varied instructional strategies activate, continuous assessment and feedback. कंपोनेंट नुह पचारिछि तो नॉट को ध्यान देबे। जोटा नेगेटिव पॉइंट थिबो सेटा ही ठीक हबो। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग रो कंपोनेंट नुहे, ऑप्शन बी हबो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। What is the role of scaffolding in organizing learning? To provide support to students while learning new skills, to simplify complex topics, to challenge students with difficult tasks, to prevent students from making mistakes. Scaffolding रो रोल कौन? स्काफोल्डिंग सहित गोटे वर्ड रिलेटेड होइकी थाए सपोर्ट किंबा हेल्प। ऑप्शन ए ठीक हबो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑफन
इट इज ए केस ऑफ डैश मोटिवेशन एक्सट्रिंजिक इंट्रिंजिक बोथ ऑफ द एभव नन ऑफ द एभव मोटिवेशन टॉपिक रे आपणकर एक्सट्रिंजिक आउ इंट्रिंजिक मोटिवेशन इंपोर्टेंट बी ऑप्शन ठीक हबो इंट्रिंजिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ लर्निंग सेटिंग ए पर्सनलाइज्ड बेस having autonomy following teacher recommended base embracing responsibility 20 नंबर ठीक हम सी ऑप्शन फॉलोइंग टीचर रिकमेंडेड बेस सेल्फ लर्निंग टाइम रे किसी भी दरकार नहीं कि टीचर रिकमेंडेड बेस को आम फॉलो करवा तो आशा करें आपण 20 ରୁ 20टा जाक क्वेश्चन आप ठीक करेंगे वीडियो शेष जाए देखि थैंक यू।